Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी once again with the program Community Talk. तो नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले कई दो महीने से तकरीबन हमारे यहाँ म्यूनिसिपल इलेक्शन का दौरा था, और आपको पता है कि म्यूनिसिपल इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर especially in Canada, because they have a lot of powers as well. Because we have the vigilant committee, which called trustees on the schools, that how the schools are running, what policies have to be implemented there. Similarly, we have the councillors and the regional councillors and the mayor that run the affairs of the city, that what type of the real estate they allowed, what type of real estate they not allowed, what type of development they needed in the city, right? All those type of things is the part of our city. So city elections are very important for the community, and that's why our community is very enthusiastic, and they take part there as well. Today, and you know that in the last program, I called some of the youngsters who win the election from our community. Today, I call a very special guest. And why I'm telling him is special, because I saw that he ran his campaign completely in a different way, how the other peoples are running. All the people, most of the people, I say most of the people are running in a one direction, and that gentleman run his campaign on the other direction. I didn't see a signboard on the street. I didn't see any card which is dropped on anybody's house. I didn't see any social media where his name and his page is there. I didn't really see anything like that. But he won the election, and that's amazed me, because in the current circus, in the modern era, where everybody have to do some sales, create some sales page about himself, have to make a videos, have to do this, have to do that, but that gentleman really didn't do any of that, and he won the election. So I asked Mr. Naveed Ahmed, who won the trustee election of Ward 3 and 4 in the Milton, and what a fine guy he is. I know him from last 10 years. Maybe people don't know him, but I know him personally. So welcome, Naveed, and thank you very much to giving the time to the Community Talk. Thank you, Arif, for inviting me. I really appreciate your time and the opportunity that you're giving me to come here and speak. So Naveed, I know you very well, and I know that from last 10, 12 years, I know you. Yes. And we talked several times on other issues, but not particularly. But today is I have an opportunity, and Toronto 360 have an opportunity as well. And my audience who are watching you, as a trustee, they don't know you. Many people don't know you. Who is Mr. Naveed? People are asking me really. Yeah. So first of all, tell me, Naveed, about yourself. That who are you, for the sake of our viewers only? Yeah, so since you're saying that you know me for last 10, 12 years, then you know that I have a passion to serve the community. I've been doing that in different shape and form, different ways. My wife and I have had the passion of teaching the young children. Then we started the youth leadership mentoring program since mid-2000s, and we have been running that program non-stop every year. And the first batches that we ran in mid-2000s, the kids have grown up to be parents and successful professionals, and we see the success, and we feel proud about it, and we really feel good that we've been able to give something to the community. And as I said, our passion is working and serving the community, working with the community and serving the community. And that's what we have been doing quietly, diligently, and that's who I am. I own a small business, and I have a legal background as well. And but I don't I have a legal background. My passion is education, and I have 4 kids, and we have raised them through HDSB system. We thought that if we get involved, we can do some we can make some changes, work towards some changes. As such, HDSB, the board and the staff, they're doing a phenomenal job as such. And our schools are a testament to that, because our schools are one of the top schools, without issue and without a doubt. And we thought that, let's get involved with the board and then
contribute further because we've been involved with the community anyhow. So that's what it is. So you are living long time. I know that in Milton. I know more than 10 years, definitely. Since early 2000s. In early 2000s is more than like 20 years, Yeah, close to. Yes. So I know that you are living there. You can understand your children are also raising there, right? And you have your institutions as well. You connect with those parents and their families, and now the children who you taught like last 10 years or 15 years before, they are become now the parent themselves, and they are in their professional life as well. So how you keep that connection, that binding strong with those pupils who are connected with you? So we always keep talking to parents, and also we speak to the youth, and we take the feedback as to what the current need of the community is. And based on that, we develop the programs. And all our programs are absolutely free. We never charge any fees. We put in our own resources, whether it's funding or it is any other resource, we put in from our pocket. We have never charged any of our students. All our programs are free. So we get in touch with the parents, with the youth. We try to find out what are the current topics, the burning hot topics that they want us to talk about, to teach them, to nurture them on. And based on that, we develop our curriculum, and we get involved with the youth, and that's what we do. So basically, like when you're involved with the community naturally feeds you back the information that concerns them. So that's what we do. Because I'm trying to understand, and I'm trying to portray a picture as well today, Naveed, that how Naveed run the election, and he run the election and he win the election, and he didn't go to the traditional way of running a campaign. He just did something different, and he win the election, right? So my next question is related to you, and I know that when people have such much connections like you're running this, and you have passion of social work as well. So people just want to become the MPP or regional councillor or mayor. I saw many people directly run for the mayor, or there are some people who directly want to regional councillor. Why you run as a trustee, Naveed? That was not off the table. It was offered at one time to run for the election, like MP. Okay. But I said no, because that's not the route I want to take. Okay. Education is our passion. Me, my wife, and I. My wife was a teacher before we moved to Canada in mid or late 90s. So she was a teacher. So we have a passion towards education, and our passion is to give as much as possible back to our schools, back to our students, back to the parents, and make positive changes and include everyone in that change, not exclude anyone. So that's what our passion is. So running for mayor or councillor or MPP or MP, I would say that's not really our cup of tea. So we're going to stay away from that. Education is our passion. And since we see I know that your wife is also run for the ward 1 and 2 for that, because you both decided to run the trustee. Yeah, we ran. She take a good enough vote. I saw that she take a vote as well, right? Yeah. So we ran parallel campaigns, and unfortunately she didn't get elected. And anyway, I have a friend in Donna Denelli, and we're going to work together anyway. Okay. So number one, definitely the because people don't see your too much flyers or social media. What do you want to really do what's your plan as a trustee? So people want to know, Naveed, that what's your plan as a trustee? My plan is to work towards the safety for students, also more technology, and I want to get the feedback from the parents about their concerns, what they want for their children, and feed it back to the board. And also I want to work towards more rights for parents, more rights for students, and inclusivity. That's what my plan is. And I would also want to work towards more hiring of minorities in the board staff. That's what my one of my plans is. One of my plans are.
and let's see how it goes. So there are some, definitely there are some challenges always there, right? And when you are running as a Muslim trustee, right, and you are representing also that community, but there are other communities as well, right? And it's not an easy that everybody be to bring to all together presentation of everyone. So how you deal that matter? People who know me, they know that I stand for equality, and I believe in equality, equal rights for everyone. And Milton is a beautiful community. It's a diverse community, and we all live there very peacefully, very happily. And let's keep Milton like that. And I believe that all have equal rights, and as long as we believe in each other's rights and respect each other's rights, the growth is natural to happen. So that's how I plan to work. I want to include everyone and not exclude anyone, and grow from there. So there's always a challenge because especially the Milton is a very conservative community, right? I know that, and I live myself is there. So it's a very conservative community, and there is always a disagreement between the secular liberal forces among the conservative forces, right? Especially the some curriculum, right? Some people want that curriculum have to be adopted, but the other people don't want to be adopted. How you deal that matter, that type of policy matters? So if we are talking about the sex education, then I think the recent changes allow the parents to pull the kids out of the class if they don't want the kids to attend. If they're not comfortable, their kids attending the sex education class, they can definitely fill up a form and pull the kids out, and they can sit out the curriculum. At the same time, we can, as trustees, I believe I have to acquaint myself with more rules and more regulations and everything and whatnot. I believe that trustees can work towards change in the way that curriculum is delivered. So hopefully, if that is the true thing, then I can work towards changing the way the curriculum is delivered to the kids. So most of the parents' concerns will be taken out. Because right now the concern is the way the curriculum is being taught, actually. Not only the curriculum, also the way it is being taught. So maybe if trustees have that hold, that say, I would like to work towards that. Because it's a policy issue, it's not related to more with the trustees, more goes to the provincial side, right? So the Ministry of Provincial itself, curriculum itself is developed by the Ministry of Education. It's more on the provincial side, But the way curriculum is delivered, I think trustees have a some say on that one, that part. You're right on that one. So there's always an opt-out form is always available there. True. But many schools discourage those things. I know in Mississauga, I live there, and that was discouraged by many schools, right? The principals and those people, right? So how you make sure that the parents who want to opt out, they really I haven't come across any issue in Milton. We work with lots of parents, and whenever the parents wanted to opt out, I haven't seen any issue that the school created, and they were able to sit out their children. If we come across anything, then we'll work towards the solution then. Okay. So my next questions to you is that, and really people want to know that why Naveed don't have any social page or website, why you not to be the part of the social media? Okay, so first and foremost, I believe that our work will speak for itself. Okay. So next is, there is not one way of doing things. So if all the candidates, all the politicians or political candidates, they all are on social media, connecting with people, asking for votes, promoting themselves, I don't believe that is the only way. There are other ways. So what we did was, we just got involved with the public. We just spoke to lots of people, lots of parents, lots of students, and we ran our campaign just like that, like personally, the way we connect in personal life with people and their children
and the way we teach without any advertising, without any social media, just word of mouth, and people come to us and we deliver courses. Yeah, that was amazing. That I want to know about more on that, Naveed, that part, that how you run the campaign, you and your wife especially. That I saw one email, and it's a very long email, really, and it's reached out to me as well. Okay. And when I read the email, I criticize on the person who sent me that email. I'm very honest with you, and I say that such a large email, man, how much time the people have to read that email? He have to shorten his little bit shorts his description, right? What do you want to write there? So people have time. People have 30 second, 20 second, 50 second, right? Yeah. Everybody have, and that's email I saw, and I say, my friend, man, please pass my message to him. So I'm not sure that whoever is passed or not passed, but that's the whole email I saw. Other than that, I never receive anything else from your side. I cannot comment on that, but because I don't even know what we are talking about here. So I know that you write an email, right? Huge, one email, big email, that between you and your wife details that why you are running the campaign, have all the details there. No, I did not write any email. On the record, I did not write any email. Is email or is WhatsApp message? I don't know. I receive on the unless WhatsApp I message. see it, I'm not going to be able to comment on that. Okay. Yeah. So anyhow, so you are saying that you are totally running your campaign, could to knock the door, meet the people. We spoke to lots of people. We called lots of people. We face-to-face spoke to lots of people, met them, met their families, and told them what we're going to do, what our planning is if we get elected, and people really loved it. Is a focused campaign, Naveed, or is just a particular community focused campaign, No, we met everybody? We met everyone. You met everybody. You knocked door everybody's Ward 3 and 4. Yeah, we actually, you know what? Surprisingly, we had the access to the voters list, but we did not make use of it. Okay. We just believed in just knocking at one door and the next and the next. We didn't care who opens the door. So how many doors you knocked, if you remember? I do not know, but quite a few. I wouldn't say that as many as the other people have done that, but yeah, few doors, quite a few doors. Because I heard that you not knocked everybody's door. You door maybe 50% or 40% door, you knocked it out, but not 100%, right? No, not. But Nobody does 100%. They are the peoples who are saying that they knocked 100% door, and they not bring the results on the right. So that's what I want to trying to understand, and I want to tell the people, knocking the door is not the only way of winning the election. I want to know what's the strategy Naveed have. See, I'll tell you very honestly, sitting here, there is no strategy. If you've done the work, if you've served the people, you've been with them, and they've seen you working tirelessly, diligently for them and their kids, they'll go and vote for you. That's what the strategy is. There is no secret juice here. We're talking about like just being honest with yourself, being honest with the community, and doing your work, and being diligent, being honest, and putting in the hard work, like rolling up the sleeves and getting in the trenches, all good work. That's it. Naveed, I think it's a great to meet with you. And I hope that you will give the time to Toronto 360 again. After 3 months or 6 months, I will definitely call you and asking you what you are doing, right? And what's the new policies are there. And the change you are dreaming for, are you able to bring some of the changes there or not? Sure. I will definitely ask you and monitor you as well. Yes, please. Okay. Definitely. Thank you for giving the time. You're most welcome, and thank you for your time. Thank you for inviting me. Thank you. Thanks. तो जनाब ये थे नवीद अहमद साहब, trustee Ward 3 and 4 Milton से, and he's an amazing guy. I met him like 12 years before. I know him very well. He's an amazing guy, and you know that he told you there is not necessarily there is a traditional way of winning the election. There is a way that how you reach out to the heart of the people. You have to do the continuous work with the sincerity, and Allah subhanahu wa ta'ala see your sincerity. And the peoples are also watching your sincerity. And on the basis of that one, you don't have to even really print the flyers or street board and this and that. You will, inshallah, will win. So sincerity,
what I learned from Naveed is the key for his success. Unless I will meet you another candidate who run the election with all the traditional way and he lost the election. Just wait there. So, जनाब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे अभी जाइएगा नहीं क्योंकि एक मेहमान हमने और बुलाए हुए हैं और उन्होंने बड़ी शानदार कैंपेन चलाई है। मतलब ऐसा लगता था उनकी कैंपेन से कि पूरा शहर मिसिसागा उन्होंने सर के ऊपर उठा रखा है। एक वॉलंटियर की उनके पास एक फौज थी और जनाब वो फौज जो है वो जब कभी कभी जनाब इस स्ट्रीट के अंदर उनके बैनर लगाने जा रही है, कभी वहाँ लगाने जा रही है, फिर कभी कोई उनको इंडोर्स कर रहा है, कभी कोई और इंडोर्स कर रहा है। बहरहाल कम्युनिटी की उन्होंने एक बड़ी शानदार कैंपेन चलाई और फर्स्ट टाइम वो खड़े हुए थे। तो मैं जनाब आप सब लोग जानते हैं कौन होंगे वो, कामिल अहमद साहब, मोहम्मद कामिल साहब। मोहम्मद कामिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जनाब वार्ड 6 से इलेक्शन लड़ा, जोरदार कंपनी चलाई। शुक्रिया आरिफ जहांगीरी साहब मुझे इनवाइट करने का। मैं ये पहली मरतबा हो रहा है कि किसी ने इलेक्शन लॉस किया हो और उसको इनवाइट किया गया हो। हाँ, नहीं, उसकी वजह ये थी कि आज का मेरा प्रोग्राम जो है ना ऐसी उसका मौजू ये है कि एक ऐसा आदमी जिसने कैंपेन नहीं चलाई, ट्रेडिशनल वे के अंदर कोई पोस्टर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, वो इलेक्शन जीत गया। और एक ऐसा आदमी जिसने बहुत सारे पोस्टर लगाए और बहुत मेहनत की और बहुत सारे तमाम डोर्स नॉक किए, जो कर सकता था एक ट्रेडिशनल वे के अंदर जो होता है, उसने वो सारे जो है ना वो तमाम सब्जेक्ट को उसने टच किया, उसके बाद जो इलेक्शन हार जाता है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद कामिल इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस इलेक्शन, कि कैसे हार गए, क्या वजूहत थी उसकी। देखें आरिफ जहांगीरी साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, पहली मरतबा मैं कैंडिडेट हुआ। और रीज़न ये था कि हमारी जो कम्युनिटी यहाँ रहती है मिसिसागा में, 11 वार्ड्स में से भी कोई भी कैंडिडेट, कोई भी काउंसलर हमारा नहीं है। और अब भी नहीं है, और अब भी नहीं है, अब भी नहीं है। और माजी में भी लोगों ने कोशिश की और लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कामयाबी नहीं हुई। तो मेरी भी एक कोशिश थी, ठीक है, और मैंने एक सिंसियरिटी के साथ कोशिश की। और इसमें मेरे जो दोस्त थे उनका बड़ा दखल था, बड़ा हाथ था। उन्होंने मुझे इनकरेज किया, ख़ास तौर पे दाऊद जान साहब, उनके बेटे बीबर्ग, मिशाल, उनकी पूरी फैमिली। इसी तरह से इमरान खान साहब मेरे एक और दोस्त हैं, अकमल नकवी साहब, आसिफ अली साहब, और बहुत सारे दोस्त जिनका मैं अभी नाम लूँ तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन ये वो दोस्त हैं जिनकी, स्टैनली खास तौर पे मेरे एक दोस्त, वो हसन साहब ने भी आपकी बड़ी मीडिया कैंपेन चलाई है जी जी। तो इस तरह के जो दोस्त थे तो उन्होंने मेरे लिए काम बड़ा किया, आसान किया। और जो मकसद था वो ये था कि हमारी कम्युनिटी को नुमाइंदगी मिले सिटी ऑफ मिसिसागा में, क्योंकि एक बड़ी तादाद हमारे लोगों की यहाँ रहती है लेकिन उनकी नुमाइंदगी नहीं है, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसी वजह से हमारे बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं। जॉब्स जो निकलती हैं, हमारी कम्युनिटी को नहीं पता कि वो जॉब्स कब निकलती हैं और कौन वहाँ पे हायर होता है। कभी मैं तमाम लोगों को दावत देता हूँ कि ज़रूर जाएं सिटी ऑफ मिसिसागा में और चेक करें कि 60% यहाँ पे जो विजिबल माइनॉरिटी रहती है मिसिसागा वार्ड 6 के अंदर, बल्कि इवन के मिसिसागा के अंदर, लेकिन आपको वहाँ डाइवर्सिटी सिटी ऑफ मिसिसागा में नहीं नज़र आती। तो मेरा एक मकसद ये भी था कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए सिटी ऑफ मिसिसागा में और डिफरेंट लोगों की आवाज़। चलिए, वो तो आपने अपनी कोशिश पूरी की ना कामिल, आपने वी ट्राई योर बेस्ट। हम तो आपकी कैंपेन को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या खोया क्या पाया। डेफिनेटली आपने कहा है कि मैं वाहिद कैंडिडेट होऊंगा शायद कि, और मैं वाहिद एंकर भी हूँ जो हारने वाले को भी बुला लेता है। जी जी, बहुत ठीक है ना। तो मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है, मेरा मकसद ये कि स्टडी करना है कि एक क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट, सोशल स्टूडेंट, ये देखना चाहता हूँ कि भाई कोई लोग इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद क्यों हार जाते हैं, उसकी क्या वजूहत होती है, उनको खुद पता होता है कि ये वजूहत है या नहीं पता होता। देखिए, जब मैंने इलेक्शन में रन करने का सोचा तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी और मैंने पूरी तनदेही से, जैसे आपको पता, कोशिश की अपने दोस्तों के साथ मिलके। लेकिन जाहिर है कि इस तरह के इलेक्शंस में हार और जीत तो होती है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि जी वो फ़लाँ ने मुझे हरा दिया या फ़लाँ ने ये कर दिया वो कर दिया। कमियाँ थी, हमने एक्सपीरियंस लर्न किया उसमें से, और
मैं ये समझता हूँ कि उन गलतियों को जब हम नहीं दोहराएंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम ये इलेक्शन जीत भी सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। फिर आपने इलेक्शन लड़ना है? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। ठीक। तो दूसरा ये कि फ़ायदा ये है कि हमारे यंग जनरेशन भी मेरे साथ इस डोर नॉकिंग में थी, इस इलेक्शन प्रोसेस में थी, और उन्होंने भी काफ़ी लर्न किया, इंक्लूडिंग मेरी डॉटर जो है सादिया, उसने भी काफ़ी लर्न किया कि किस तरह डोर नॉकिंग की जाती है, किस तरह इलेक्शन कैंपेन की जाती है। तो बेसिकली हमने न्यू जनरेशन को भी ग्रूम करने की कोशिश की है कि कल को अगर हम इलेक्शन ना भी रन करें तो जो नेक्स्ट जनरेशन है जो यहाँ पे बोर्न एंड रेज हुई है वो उसके पास काफ़ी सारी स्किल्स आ चुकी हो। तो ये हमने कोई लॉस नहीं किया, हमने अपने बच्चों को ट्रेंड भी किया इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ आप महसूस नहीं करते कामिल के, मैंने बहुत सारे लोगों से सवालात किए, इधर बुलाया भी मैंने बहुत सारे लोगों को, और मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया कि मेरा ख्याल है कि एक जो बुनियादी चीज़ जो हमारी कम्युनिटी के अंदर जो भी इलेक्शन लड़ने जाता है उसके अंदर जिस स्किल सेट की कमी नज़र आती है मुझे, वो ये है कि उसको पूरी तरीके से जो भी इलेक्शन वो लड़ने जा रहा है जिसका वो कैंडिडेट, उसके बारे में आगाही नहीं है, उसको मुकम्मल ये भी नहीं मालूम है कि इसका काम क्या होगा। वो जनाब हम जो है ना वो एक एजम्पशंस के ऊपर जो है ना एक वो बनाते हैं पूरी कंपेन के हम ये करेंगे, या हम कहीं से हमें पता चल गया कि ये स्नो ब्लोअर है, इसको उठाना है, स्नो उठानी है, ये उठाना है, वो उठाना है, 4-6 जो ट्रांसपोर्ट के इशू हैं 4-6, लेकिन हम जो है ना कोई ऐसा डायनामिक इशू लेकर नहीं आते जो कि सिटी से रिलेटेड जो चैलेंज करे, जो कि एग्जिस्टिंग काउंसलर्स होते हैं या उनको चैलेंज करे उनके इलाकों के अंदर कि देखो तुम ये लोग ही नहीं करो। इस तरह का कोई इशू मुझे नजर नहीं आया। मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत सारे इश्यूज को टच किया था, और यही वजह है कि आप ये देखें कि जो इनकम्बेंट काउंसलर है वो भी अपनी सीट को बरकरार नहीं रख सका। रॉन स्टार साहब, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह उसकी बहुत सारी कमजोरियां तो होंगी, लेकिन मैंने उस कमजोरियों को, उन वीकनेसेस को हाईलाइट भी किया, अपने लोगों को बताया कि देखें हर साल सिटी ऑफ मिसिसागा प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज करती है, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि हज़ारों लोग अपनी जॉब से जा चुके हैं कोविड की वजह से, और हमारे लोगों में सारे जो भी यहाँ रेजिडेंट्स हैं उनमें ये सकत नहीं है कि वो मज़ीद टैक्स हाइक को बर्दाश्त कर सकें। तो मैंने ये लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश की कि देखें अगर आप इस पे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जनवरी में 5.7% सिटी टैक्स अगेन बढ़ा रही है, तो इस पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, लेकिन एज ए काउंसलर मैं डेफिनेटली इसको 2 साल के लिए फ्रीज कराने की कोशिश करूंगा। देखिए ये तो सारी बात कर सारे काउंसलर कर रहे होते हैं ना, ये तो जो काउंसलर नहीं, कोई किसी काउंसलर ने नहीं की। अच्छा। देखें जो इनकम्बेंट है, मैं 2-3 लोगों से जिनसे किया उन्होंने ये बात, मैं वार्ड 6 की बात कर रहा हूँ। मैं ठीक है, दूसरे वार्ड के भी लोग ये बात कर रहे हैं। वार्ड 6 में जो काउंसलर है वो तो जाहिर है बढ़ाए चले जा रहे हैं। जो अभी जो न्यू इलेक्ट हुए हैं वो ये काम कर नहीं सकते थे और ना कर सकेंगे, क्योंकि वो तो पार्ट ऑफ द टीम है। कौन कर सकता है? जो कि इसके लिए लिख कर दे रहा है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फ्रीज दिस प्रॉपर्टी टैक्स फॉर 2 years। इसी तरीके से कार जैकिंग का है, और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, या स्पीडिंग है, या पार्किंग इश्यूज हैं, वो तो कहते हैं, वो तो आते नहीं ना, वो तो कहते हैं कि ये तो पुलिस का मैटर है और हमारे तो उसमें नहीं इसमें बहुत सारे चीजें हैं। मैंने इसको, ये चूंकि बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने इन इश्यूज के ऊपर लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की थी और लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। यही वजह है कि 1700 वोट कम नहीं होते। अच्छा, आपको मैंने देखा कि दूसरी कम्युनिटीज ने भी आपको काफी सपोर्ट किया है, राइट? आपकी पर्सनल दोस्तियां भी हैं फिलिपीनी कम्युनिटी से, स्पेशली उन्होंने भी आपको, कुछ लोगों ने वहां पर इंडोर्स किया था, तो आप समझते हैं कि आपको दूसरी कम्युनिटी का वोट भी कुछ मिला है? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो एक दोस्त हैं पास्टर एलेक्स, उन्होंने मुझे इंडोर्स किया। उनके जो वॉलंटियर्स थे वो जाके डोर टू डोर नॉकिंग कर रहे थे मेरे साथ। इसी तरह से एमपी सिटिंग जो है मिसिसागा सेंटर की, वो मेरे साथ डोर नॉकिंग कर रही थी, आपको नॉलेज में है। उनके जो और वॉलंटियर्स हैं वो मेरे साथ डोर नॉकिंग कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि मुझे खाली अपनी कम्युनिटी की सपोर्ट थी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट कम्युनिटीज़ की भी सपोर्ट थी, और इसमें इंडियन कम्युनिटीज़ भी है और पोलिश कम्युनिटी। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है आपके और जीतने वाले। 7000 वोट लिए उन्होंने, मोर देन 7000 वोट। आपने 1700 वोट लिए। रॉन स्टार ने भी इवन मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम वोट लिए, उन्होंने 2900 के करीब, 3000 के करीब उन्होंने वोट लिए। तो व्हाई इज सच अ बिग डिफरेंस? व्हाई जो हॉर्निक बिकम्स सो स्पेशल? देखें, इसमें
अगेन के ये मेरा पहला टर्म था। वो लोग ऑलरेडी 2-3 दफ़ा इलेक्शन में प्रोसेस से गुजर चुके थे। अगर आप ओंटारियो में, मैं आपको चैलेंज करता हूँ सारे लोगों को कि वो पूरे ओंटारियो में सारे वार्ड्स में चेक करें कि किस कैंडिडेट के लिए, जो कि इनकम्बेंट भी ना हो, उस शहर का मेयर निकला हो और उसके लिए डोर नॉकिंग कर रहा हो। ये मेरे वार्ड में हो रहा था। ठीक है। किस शहर में, किस वार्ड में ऐसा हुआ है कि 3 सिटिंग एमपीज जाके डोर नॉकिंग कर रहे हो उसके लिए, जिन्होंने, और वो एमपीज जिन्होंने वोट हमारी कम्युनिटी से लिए। बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी राइट कि रॉन स्टार जो है वो असेंबली के अंदर जो है म्युनिसिपल असेंबली के अंदर टफ टाइम दे रहे हो मेयर को, तो मेयर नहीं चाहती हो कि वो दोबारा इलेक्ट हो के नहीं नहीं, तो मैं तो देखें आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ है। तो मैं इसके लिए रीजन नहीं दे रहा हूँ कि मैं क्यों हार गया या मुझे नहीं हारना चाहिए था, लेकिन मैंने जैसा अर्ज किया कि मेरा पहला टर्म अटेम्प्ट था। लेकिन आप ये देखें कि 3 सिटिंग एमपीज किसी पूरे ओंटारियो में, आप जाके देख लें कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कैंडिडेट के लिए 3 सिटिंग एमपीज डोर नॉकिंग कर रहे हों, डोनेशन दे रहे हों, वोट मांग रहे हों। वो मेरे अगेंस्ट हो रहा था। और वो कौन कर रहे थे? वो लोग थे जिन्होंने हमारी कम्युनिटी से वोट लिया था और वो अपनी ही कम्युनिटी के अगेंस्ट। तो अच्छा, वैसे आपके वार्ड में हमारी कम्युनिटी का वोट कितना है? पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी रहती है? मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम कम्युनिटी तकरीबन 10% है। 10% से मुराद 80,000 के 10% आप लगा लें तो 80,000 का टाइम है 8,000। 8,000 वोटर्स उसमें से कितने हैं? ये 8,000 वोटर्स हैं। अच्छा 8,000 वोटर्स जी, हैं जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। तो आपको 1700 वोट पड़े हैं, तो कितने % वोट आप समझते हैं कम्युनिटी का पड़ा है आपको? मैं समझता हूँ कि 1700 में से 1500 से भी ज्यादा हमारी कम्युनिटी के मिले होंगे डेफिनेटली। इशू यह है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे बहुत ज्यादा मुतारिक होती है, बाहर निकलती है, वोट डालती है। वो उनका एक पार्टी लाइन होती है। ठीक है। लेकिन चूंकि म्यूनसिपल इलेक्शन आपको पता है कि इसके पीछे पार्टी नहीं होती, इंडिविजुअल बेस पे होता है, तो हमारी कम्युनिटी इतना इसको अभी तक ध्यान नहीं देती और इसमें इतना पार्टिसिपेट नहीं करती, जो कि मेरे ख्याल में होना चाहिए। वजह क्या है? वजह क्यों होना चाहिए? इसलिए कि 90% जो हमारे डे टू डे लाइफ के मैटर्स होते हैं वो एमपीपी या एमपी सॉल्व नहीं कर सकता, वो काउंसलर सॉल्व कर सकता है, सिटी सॉल्व कर सकती है। इवन कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो जॉब्स क्रिएट होती हैं, चाहे पैरामेडिक्स हो, फायर फाइटर हो, पार्क्स एंड रिक्रिएशन हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, बाइल ऑफिसर हो, पार्किंग इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो, मैं चैलेंज करता हूं लोगों को कि आप मुझे उसमें विजिबल माइनॉरिटी का, स्पेशली हमारी कम्युनिटी का कोई बच्चा या बच्ची दिखा दें। उसके क्या रीज़न है, ये हम लोगों को खुद सोचना चाहिए। चले काबिल, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और आपके, क्योंकि मैंने कहा था कि आपके बारे में ज़रूर पूछूंगा कि भाई इलेक्शन की बड़ी ज़ोरदार कैंपेन चलाई, कोई बात नहीं, और व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख। आपने अच्छी शानदार कैंपेन चलाई है, एक रिस्पेक्टफुल नंबर ऑफ वोट्स भी दिए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम वोट पड़े हो कि घर वालों ने भी वोट नहीं दिया। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों का इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा भी है जिनके घर वालों ने भी उनको वोट नहीं दिया। सो डोंट वरी अबाउट इट, कीप इट अप। और क्योंकि एवरी फेलियर ब्रिंग अ न्यू सक्सेस इन योर लाइफ, और हर फेलियर जो होता है आपको एक नया सबक सिखा के जाता है। एंड इफ यू आर फैसिनेटेड अबाउट दिस काउंसलर इलेक्शन, देन आई होप दैट कि आप नेक्स्ट टाइम फिर इलेक्शन लड़ेंगे और इस दफ़ा ज़्यादा तैयारी से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, और उम्मीद है कि इस दफ़ा जब हम अपनी कम्युनिटी को 4 साल में, नेक्स्ट 4 ईयर्स में इस बात के लिए अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करेंगे कि म्यूनसिपल इलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारी कम्युनिटी के कम अज़ कम 1 या 2 काउंसलर होने चाहिए। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में ज़्यादा तादाद में लोग निकलेंगे और वोट डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे जनाब मोहम्मद कामिल साहब। मोहम्मद कामिल साहब ने वार्ड 6 मिसिसागा से इलेक्शन लड़ा था। एक दफ़ा फिर मैं तकरीबन 20 सालों से मिसिसागा, मैं कोई 18-19 साल मिसिसागा में रहा हूँ, और इस पूरे अरसे के अंदर एक दफ़ा भी कोई काउंसलर, कोई ट्रस्टी, कोई इस किस्म का शख्स जो है वो नहीं जीत सका हमारी कम्युनिटी से। अनफॉर्चुनेट है बड़ी बात कि इस दफ़ा भी नहीं जीत सका, और ये हमारी ख्वाहिश जो है एक दफ़ा फिर हमारे दिल के अंदर रह गई कि इतनी बड़ी तादाद में मिसिसागा के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, जबकि हमारे यहाँ पर जो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उमर गबरा साहब और जो है ना वो सिस्टर इकरा जो है वो ऑलरेडी जो है ना एमपी का इलेक्शन जीती हुई हैं, और खालिद रशीद साहब एमपीपी का इलेक्शन भी जीत रहे। हमारी प्रेजेंटेशन इस लेवल पर तो है, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर और नेशनल लेवल, फेडरल लेवल के ऊपर, मगर
सिटी लेवल के ऊपर हम 20 साल से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और वो दरवाज़ा हमारे लिए नहीं खुल रहा। उसकी कई वजूहात होंगी, उसकी हमें देखना पड़ेगा, कम्युनिटी को समझना पड़ेगा कि क्या हमें किस किस्म के कैंडिडेट की ज़रूरत है, क्या हमारा होमवर्क पूरा नहीं है, क्या हमें नए चेहरों की ज़रूरत है, अच्छी कैंडिडेट्स की ज़रूरत है ताकि लोगों को हम मुतासर कर सकें। क्यों नहीं दूसरी कम्युनिटी हमें वोट दे रही और हम तो दूसरी कम्युनिटी के लिए हमेशा हाथ फैलाकर हम अपने फैला के उनको वेलकम करते हैं, उनके लिए काम भी करते हैं, उनको वोट भी देते हैं। लेकिन क्या वजूहत है कि हमारी कम्युनिटी का जब वक्त आता है या हमारा कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा होता है, दूसरी कम्युनिटीज़ उस तरीके से हमें सपोर्ट नहीं करती। ये वो सवालात हैं जो मैं आपके लिए आज छोड़कर जा रहा हूँ। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आरिफ जहांगीरी अगले हफ्ते नए प्रोग्राम और नए मौजू के साथ फिर हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।